Question number 18 is an equation of a curve is ln xy minus y cube equals to 1. Show that dy equals dy over dx equals to this. Up, you must know how to derivate ln fx. How do we derivate ln fx? It's 1 upon fx times f prime x. Okay, that's how you derivate a log function, a natural log function. Secondly, एक्स वाई को कैसे डेरिवेट करते हैं? प्रोडक्ट रूल से. और प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि there's f and g function being multiplied and you're derivating that, so the rule is it's f prime g plus f g times g prime. तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए. फिर इम्प्लिसिट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब हम y को डेरिवेट करते हैं उसके बाद हमने dy over dx भी लिखना होता है. So if you know all of this, only then you'll be able to derivate this. So let's start. It's ln xy minus y cube equals 1. Did you guys hear me properly? Not getting any response from anyone. Yes, ma'am. Acha, theek hai. All right. So let's start derivating. It's going to be 1 upon xy. But then you have to derive xy again because of this rule. अब xy को दोबारा साथ डेरिवेट करना है, so उसके लिए हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा. x का डेरिवेटिव हो गया 1 और y साथ मल्टीप्लाई हो गया, so 1 times y, then a प्लस साइन. अब फर्स्ट फंक्शन उसी तरह रहेगा x और y को डेरिवेट करना है, which gives us dy over dx. So that is this part, 1 upon fx times f prime x. अब minus y cube को डेरिवेट करना है, it's going to be minus 3y square with dy over dx equals to 0. Now make dy over dx the subject, move everything around. So we have यहाँ पे आ गया 1 upon x when we open the brackets plus 1 upon y dy by dx minus 3y square dy by dx equals to 0. Okay. All right, अब dy over dx को कॉमन ले लेते हैं and we have 1 upon y minus 3y square equals minus 1 over 6. Take LCM and then cross multiply. Dy over dx times 1 minus 3y cube upon y is equals to minus 1 over x. Cross multiply. Dy by dx equals y upon minus y upon x 1 minus 3y cube. और अगर आप इस माइनस को इस ब्रैकेट का -1 कॉमन ले लेते हैं तो फिर वो ऊपर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा. सो dy over dx equals minus y upon minus x 3y cube minus 1. So now we get the exact required form. Dy by dx equals y upon x 3y cube minus 1.
Any questions here? अब again I keep telling you guys कि इसके questions तभी होते हैं जब सारे cases बहुत अच्छे आते हैं. Okay. Part 2 करते हैं. Find the coordinates of the point where the tangent to the curve is parallel to the y-axis, giving each coordinate correct to 3 significant figures. Ab when is the tangent parallel to the y-axis? Let me just draw a figure, a curve, जिसका tangent y-axis के parallel हो. Let's say ऐसा curve है. तो इधर इस point पे जो tangent बनेगा, that's going to be parallel to the y-axis. Gradient क्या होता है ऐसी line का जो y-axis के parallel हो? इसकी slope क्या होगी? Vertical line की slope क्या होती है? Horizontal line की slope क्या होती है? Zero. हॉरिजॉन्टल की 0 होती है. हाँ, तो फिर वर्टिकल की क्या होती है? 1/0 विच इज अनडिफाइंड. इसकी स्लोप होती है अनडिफाइंड. तो अगर एक टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो फिर तो उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होगा. तो अब इस ग्रेडियंट को हम कैसे बोलें कि ये अनडिफाइंड है? बाय इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर टू 0. इफ दिस इज एन अनडिफाइंड ग्रेडियंट और स्लोप, then the denominator should be equals to 0. और अगर ये होता ना कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो स्लोप 0 होती, तो हम सीधा dy/dx को इक्वल्स टू 0 कर देते. बट सिंस इट्स पैरेलल टू द y एक्सिस, that means undefined slope है, and the only way this expression for dy/dx can be undefined is when its denominator is 0. So denominator को 0 के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं. So oops. X 3y cube -1 equals to 0 होगा. X की वैल्यू आ रही है x0 और y क्यूब की वैल्यू आ रही है 1/3 और y की वैल्यू आ रही है क्यूब रूट ऑफ 1/3. इसमें करना क्या था इस क्वेश्चन में? होल्ड ऑन. Find the coordinates of the point where the tangent to the curve is parallel to the y-axis, giving each coordinate correct to 3 significant figures. Each coordinate का that means एक से ज्यादा coordinate आएंगे और वो हमें नजर आ रहा है. एक हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, उससे हम इसकी करस्पॉन्डिंग एक x की वैल्यू आई है, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू निकाल देंगे. और एक हमारे पास y की वैल्यू आई है, उसको भी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल देंगे. सो आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में. हाँ जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में. सो क्या होता है 1/3 का क्यूब रूट ऑफ 1/3 in 3 significant figure is 0.693. But we need its corresponding x and we need the corresponding y for this. So let me copy the original equation. The original equation is ln xy minus y cube equals to 1. तो जब x 0 हो जाएगा तुम्हारे पास आ जाएगा ln 0 तो अनडिफाइंड होता है, तो x 0 के लिए there is no solution. ठीक है, if you try substituting this in the original curve, you get ln 0 minus y cube equals to 1, which gives no solution. Okay. Now let's substitute the y cube to or y to cube root of 1/3. So we have ln x और y की जगह I'm going to use 0.6933361. Try to use as
big value as possible, highest number of significant figures use कर लो, जितने भी use कर सकते हो. और जब इसको कैलकुलेटर में यूज कर रहे होगे तो आंसर की यूज करोगे. एंड माइनस y क्यूब की जगह मैं 1/3 ही लिख रही हूँ बिकॉज y क्यूब इज 1/3 equals to 1. Now solve this. 1/3 goes to the other side. We get 1 plus 1/3 ln 0.693361 x equals 1 plus 1/3 क्या हो गया 4/3. अब ln को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो e बन जाएगा और पावर में आ जाएगा 4/3 and then you get 0.693361 x. और अब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डेसिमल वैल्यू इधर डिवाइड हो जाएगी. e 4/3 upon answer. So what does that give us? That gives us 5.47. So the coordinate of x comma y that we're getting is in three significant figure 5.47 comma 0.693. That means this is that point where if a tangent is drawn, it's parallel to the y-axis. Okay. Next question. Question 90. Perimetric equation of a curve is this and this. Express dy over dx in terms of t. Perimetric equation here, that means chain rule use हो रहा है to find dy over dx. So dy over dx is going to be dy by dt times dt by dx. Let's start with derivating x equals 4t upon 2t plus 3. This is going to be the quotient rule of division, so of differentiation. So if you're deriving an expression which has a term in the numerator, a term in the denominator, then the rule is f gets derivated, g gets multiplied with it, a negative sign in between, f gets multiplied with the derivative of g upon g square. You want to use this rule? So dx upon dt will be equals to 4t को derivate करेंगे, we get a 4, and then the denominator gets multiplied. A negative sign in between, 4t stays the same, and we derivate the denominator 2t plus 3, which gives us a 2. And in the denominator, we square the 2t plus 3. Now, so that's giving us 8t plus 12 minus 8t upon 2t plus 3 whole square. So dx over dt is coming out to be, यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 upon 2t plus 3 whole square. Okay. All right, now we have to derivate y with respect to t. So the equation is y equals to ln 2t plus 3. Okay. So now we're going to use the differentiation of ln fx. 2 is a coefficient, stays the same. और ln fx की derivation क्या होती है? For deriving this, it's 1 upon fx times f prime x.
So 1 upon 2t plus 3 times the derivative of the function, which is 2t plus t. So derivative of 2t plus t is 2. So यहाँ पे dx over dt लिखना था. So dy over dt. dy over dt is 4 upon 2t plus 3. Now substitute the values in the chain rule. Dy over dx will be dy over dt, which is this, times dt over dx, which is going to be the reciprocal of this. So it's going to be 2t plus 3 square upon 12. Simplify, and we get dy over dt, dy over dx, equals 4 and 12 cancel. यहाँ पे 3 आ गया और ये square से cancel हो जाएगा. So we're getting 2t plus 3 upon 3. That is dy over dx, the expression for the gradient. Part 2. Find the gradient of the curve at the point where x is equals to 1. X is equals to 1 पे हमने gradient निकालना है. But जो dy over dx का expression है उसमें तो x है ही नहीं, उसमें तो t है. So what we'll do, we'll substitute the value of x here and get the corresponding t for that x, and then substitute that t here. So when x is 1, we have 1 is equals to 4t upon 2t plus 3. Cross multiply 2t plus 3 is equals to 4t. 2t equals 3. T equals 1.5. Now substitute 1.5 in dy over dt and you'll get the value of the gradient at x is equals to 1. Here 2 are. That's the answer. कोई questions हैं तो please पूछो. Move it on then. Question 20. The equation of a curve is this. Find the gradient of the curve at the point 2, minus 3. So we derive this implicit equation and make dy over dx the subject. Okay, so let's start with the derivation. We're derivating it with respect to x. So 3x square का derivative हो जाएगा 6x minus 4. Then we have to derivate xy. To derivate xy, we have to use the product rule. And what's the product rule of differentiation again? If we're differentiating fg, the rule is f prime g plus fg prime. So use that rule here. X gets derived, it's 1 times y stays the same, plus sign in between, x stays the same, and we have to derivate y, which is dy over dx. Then plus, we derivate y square with respect to x. So that's 2y, and then dy over dx. Equals to, we derivate 45 with respect to x, which is 0.
Expand, we get 6x minus 4y minus 4x dy by dx plus 2y dy by dx equals 0. Moving everything towards the right except for the dy by dx terms. So 4y minus 6x and take dy by dx common. Also, let's take 2 common here. So, yeah, chalo 2 बाद में common ले लेंगे. Take dy by dx common, so we get 2y minus 4x. And then we divide dy over dx equals, अब मैं 2 common ले रही हूँ, both from the numerator and the denominator. That's giving me 2y minus 3x upon y minus 2x. Let me take the answer. That's correct. Okay, find the value of the gradient at the point 2 comma minus 3. So we just substitute the values of x and y. 2 times minus 3 times 2 upon minus 3 minus 2 times 2. Let me double check. 2 times minus 3 times 2 upon minus 3 minus 2 times 2. Okay. This should give us minus 12 in the numerator, minus 7 in the denominator. So 12 over 7 is the gradient at that particular point, 2 comma minus. This is part 1. कोई questions हैं तो please पूछो, वैसे पूछते तो हो नहीं. Part 2. Part 2 में क्या है? Show that there is no point on the curve where gradient is equals to 1. तो हमने दिखाना है कि gradient 1 के equal नहीं हो सकता. तो पहले हम gradient 1 के equal करके देखते हैं कि आ क्या रहा है हमारे पास ऐसा जो हो ही नहीं सकता. So let's equate dy over dx to 1. So that's this is dy over dx. So 2y minus 3x upon y minus 2x equals to 1. So 2y minus 3x equals y minus 2x. तो ये आ गया y और यहाँ आ गया minus x. Y equals to x आ गया. Show that there is no point on the curve at which the gradient is equals to 1. Alright. अगर y is equals to x है, so let's try putting it back in the original equation. It will probably give us something very illogical, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि hence it's not possible for the derivative to be 1. Because I'm substituting it back, तो मैं y को भी x बना रही हूँ. So minus 4x square plus y x square equals 45. तो y की जगह x लिख दिया. तो यहाँ मेरे पास आ रहा है 0 is equals to 45. Which is obviously not possible. Not possible. Hence, dy over dx cannot be equals to 1. (21) करते हैं.
Okay. The diagram shows this curve y equals x square e power minus x. Show that the area of the shaded region blah blah. Area तो होता है इंटीग्रेशन से आता है. इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ी ही नहीं है तो पार्ट 1 नहीं कर रहे. Part 2. Find the x coordinate of the maximum point M on the curve. This we know. So to find the anything on related to the maximum or the minimum point, we know that the tangent here is flat, a horizontal line that is we know that dy over dx should be equals to 0. That's how we start part 2. At the maximum or the minimum, dy over dx should be equals to 0. Okay. So we have to derivate the curve y equals x squared e minus x. That's the product rule again, which is fg's derivation is f prime g plus fg prime. Secondly, the derivative of e power fx is e power fx times f prime x. So let's apply both these cases here. Dy over dx would be derivative x square, that's 2x. The second function remains the same, plus the first function x square remains the same. And now we derivate e power minus x. E power minus x की derivation would be e power minus x times the derivative of this function, which is minus 1. So the derivative is minus e power minus x. And then we equate it to 0. So we're getting 2x e power minus x minus x square e power minus x equals to 0. We can take x common, we can take e power minus x common. So we get 2 minus x is equals to 0. Okay. So now we have 3 products equals to 0. So we can say x is equals to 0 or e power minus x equals to 0 or 2 minus x is equals to 0. So यहाँ से value आ रही है x equals to 0, यहाँ से value आ रही है x is equals to 2 और यहाँ से value आ रही है take e to the other side, it will become ln 0, which gives no solution. So अब हमारा आंसर x का क्या 0 है या 2 है. Let's go back to the figure again. m का हमने x कोऑर्डिनेट बताना था ना. So it can't be 0. 0 तो इधर है. 0 पे मिनिमम है. इसीलिए मिनिमम का भी आंसर निकल रहा है x is equals to 0 क्योंकि मिनिमम पे भी डेरिवेटिव is equals to 0. The tangent of the curve is equals to 0. So dy over dx is equals to 0. So ये तो मिनिमम वाला आंसर बता रहा है जो हम नहीं यूज करेंगे. The only answer we're going to use here is this one. X is equals to 2. Okay, part 3. Find the x coordinate of the point P at which the tangent passes through the origin. Okay, let me draw the figure again. एक पॉइंट P है जिसपे वो बता रहे हैं अगर आप टेंजेंट बनाओ तो it passes through the x-axis. So they're asking for the x coordinate of P. यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो बतानी. So हमें पहली चीज ये करनी होगी कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे. जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे विद द इक्वेशन ऑफ द कर्व. तो उससे हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा and that should be our answer. Let me repeat what I said we should do. हमें फाइंड करना है P का x कोऑर्डिनेट और P क्या पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जो है दैट पासेस थ्रू ओरिजिन. तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे. हमें कर्व की इक्वेशन पहले ही पता है, उसमें टेंजेंट की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी where the straight line and the curve graph
intersect. बल्कि 2 minutes रह गए हैं. I won't be able to finish this, so please take this part as homework. कल के लिए there are just 2 more questions left from the worksheet. वो हम करेंगे और फिर मैं इसी के कुछ केसेस रिवाइज करवाऊंगी क्योंकि कल I don't want to start integration. फिर मंडे से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. If you have any particular questions from this topic, please discuss with me tomorrow. ठीक है. अल्लाह हाफिज. We'll continue from here. 21 part 3 आप होमवर्क में ट्राई करो. अल्लाह हाफिज. Take care.